बच्चों, so let's read this question. Correct order of increasing acidic strength is phenol smaller than ethanol, smaller than chloroacetic acid, smaller than acetic acid. B. Ethanol smaller than phenol, smaller than chloroacetic acid, and smaller than acetic acid. C. Ethanol smaller than phenol, smaller than acetic acid and chloroacetic acid. And we have last chloroacetic acid smaller than acetic acid, smaller than phenol, smaller than ethanol. तो हमें इसमें ऑर्डर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है और हमें कंपाउंड जो दिए हुए हैं इट इज फेनॉल एथेनॉल क्लोरोसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. तो हमें इनको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है. नाउ लेट अस राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन और समझते हैं सबसे बेसिक चीज क्वेश्चन की एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है. सो द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड to dissociate into a proton and an anion is known as acidic strength. तो हमारा जो कॉन्जुगेट बेस होता है इट इज अ स्पीशीज क्रिएटेड व्हेन अ प्रोटॉन इज टेकन आउट ऑफ एन एसिड. तो लेट अस फाइंड आउट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर गिवन टू अस. तो अगर हम कॉन्जुगेट बेस ऑफ फेनॉल की बात करें तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ फेनॉल इज फेनॉक्साइड आयन. लेट अस राइट दिस आल्सो. कॉन्जुगेट बेस ऑफ phenol is phenoxide ion. कॉन्जुगेट बेस ऑफ एथेनॉल की बात करें तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एथेनॉल is ethanoxide ion. Oxide ion. अगर हम क्लोरोएसिटिक एसिड की बात करें ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इसका हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है कार्बोक्सिलेट आयन. एंड इफ वी टॉक अबाउट एसिटिक एसिड इसका हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है एसिटिक एसिड इज एसिटेट आयन. Acetate ion. Now let us talk about each of these conjugate bases one by one. अब हमें पता है ड्यू टू delocalization of the negative charge phenoxide ion is more stable than ethoxide ion. तो हम इस conjugate bases के इस पे चूज करेंगे these acidic strength. तो हमें पता है ड्यू टू delocalization of the negative charge phenoxide ion are more stable than ethoxide ions. Stable than ethoxide ions. The highly electronegative oxygen ion in phenoxide ion has large electron density and is stabilized by resonance. पर जो हमारा ethoxide ion है, it is unstable because resonance इसमें नहीं हो पाता है. So we can say that जो हमारा phenoxide ion है, let us write it in points क्योंकि उससे हमें easy हो जाता है understand करना. तो phenoxide ion हमारा highly electronegative होता है. और it is more stable than ethanoxide ion. We already discussed it. And highly electronegative होता है because of oxygen ions. And we have large electron density of phenoxide ion. And it is stabilized by resonance. हम ये reason बता रहे हैं how phenoxide ions are more stable than ethoxide ions. और अगर हम ethoxide ion की बात करें इधर तो हमारा जो ethoxide ion होता है they are not stabilized by resonance
and the negative charge is not delocalized. They are not unstable. They are unstable. Resonance do not occur. And the negative charge is not delocalized. Is not delocalized. तो हम इन सब रीजन से कह सकते हैं जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल है, इट इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल. लेट अस राइट इट आल्सो. Phenol is more acidic than ethanol. Now let us discuss chloroacetic acid and acetic acid. अगर हम acetate की बात करें, acetate can be stabilized successfully by resonance than phenoxide. More successfully by resonance than phenoxide. Due to the fact that जो हमारा फेनॉक्साइड होता है इसमें केमिकल कॉन्फ़िगरेशंस होती है, तो नेगेटिव चार्ज इज अप्लाइड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन. और जो हमारा एसिटेट आयन होता है इसमें टू आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉक्साइड ion, and acetic ion is more acidic than phenoxide ion because of the resonating structures. So let us write it also. तो phenol हमारा कम एसिड हो गया, कम एसिडिक हो गया एसिटिक एसिड से. Now let us talk about the chloroacetic acid. तो chloroacetic acid में तो हमारा क्लोरीन ग्रुप अटैच होता है, which is an electron withdrawing group. So the chlorine group at chloroacetic acid is an electron withdrawing group by dispersing the negative charge through inductive effect and stabilizing the acetate ion. It makes acetic acid more acidic. Is an electron withdrawing group by dispersing the negative charge through the inductive effect and stabilizing acetate ion. It makes acetic acid more acidic. It makes chloroacetic acid more acidic. Now, if we talk about the correct order, we discussed all the reasons which are present. तो सबसे कम हमारा acidic ethanol होता है. Then we have our phenol. उसके बाद आता है हमारा acetic acid. Then we have our chloroacetic acid. तो जो हमारा क्लोरोएसिटिक एसिड में होता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लोरीन ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड और वी कैन से एसिड. सो हमारा ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है. तो अगर हम ऑर्डर मार्क करना चाहे, वी हैव एथेनॉल, देन फिनॉल, देन एसिटिक एसिड, देन क्लोरोएसिटिक एसिड. हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर टू द question. I hope you understood the question well. Best of luck.